आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। हम सहमत हैं कि इसमें और अधिक सहयोग का अनटैप्ड पोटेंशियल भी है। आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा। रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। भारत चिली की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और चिली सहमत है कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम एकमत है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देते रहेंगे। फ्रेंड्स, विश्व के मानचित्र पर भारत और चिली भले ही अलग छोर पर हो, हमारे बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु प्रकृति ने हमें अनोखी समानताओं से जोड़ा है। भारत के हिमालय और चिली के एंडीज पर्वतों ने हजारों वर्षों से दोनों देशों में जीवन धारा को आकार दिया है। भारत में हिंद महासागर की लहरें उसी ऊर्जा से बहती हैं जैसे प्रशांत महासागर की तरंगे चिली के तटों पर को छूती है। दोनों देश न केवल प्राकृतिक रूप से जुड़े हैं, बल्कि हमारी संस्कृतियां भी इसी विविधता को अपनाते हुए एक दूसरे के करीब रही है। चिली की महान कवि और नोबेल लॉरिएट गैब्रिएला मिस्ट्रेल को रविन्द्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष के विचारों में प्रेरणा मिली। उसी तरह भारत में भी चिली के साहित्य को सराहा गया। चिली के लोगों में भारत की फिल्म्स,
क्विजीन, क्लासिकल डांसेस में बढ़ती रुचि हमारे सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत उदाहरण है। आज चिले को अपना घर मानने वाले लगभग 4000 भारतीय मूल के लोग हमारी इस साझा विरासत के संरक्षक हैं। उनकी देखरेख के लिए मैं राष्ट्रपति बोरिच और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आज दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमने दोनों देशों के बीच वीजा प्रक्रिया को सरल करने पर भी विचार किया। हम भारत और चिले के बीच स्टूडेंट्स एक्सचेंज बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का सृजन हुआ है। इस ऊर्जा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र में हमारे सहयोग को नई गति मिलेगी और दिशा मिलेगी। मैं भारत में आपके सुखद यात्रा और प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रासियास। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile, to give his remarks to the media. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. To everyone present here, to start with this press release for thanking the Prime Minister for the invitation given to me, who in last November during the G20 in Rio de Janeiro, where we were also invited to be part of the G20, was of useful nature of our participation. We share our relations with India and the possibilities of the potential which have not been explored yet should be worked upon. Today, we have come here to consolidate the 7 decades of our relation with India, which were more than, which are based in the earlier visits from Chile. I have the honor of being the 3rd president who is visiting India after the 16 years of Michelle Bachelet and earlier Ricardo Lagos. Now we have a cultural exchange. I'm not going to a specific number, but India has converted into the 7th position of our partner, which invites us to boost our relations with India in our personal and with our meetings, in open meetings also. We have spoken about our commercial relations, about the possibilities of investment, the increase, the importance of critical minerals in Chile. That is converting into a relevant topic or to face the global climate change, marking the present as the way forward for the future of this of the planet towards sustainability, and the case of technology development which we can share with India. But it is not just the commercial part, but rather the cultural aspect as well. We have spoken about spirituality. We have spoken about how this world, which requires more than money, but as a civilization which has such a long continuity like India, can be of great utility for all of us. Without any doubt, there are many opportunities on the landscape to boost our bilateral relations. The cooperation between Codelco and Industry Copper Limited, which has the objective of knowledge exchange
and training to better their performances, and identifying the related activities of exploring the passages, also to see the benefits which can be drawn from the mineral industry, where there are times where there are threats at world level. The diversity of the Chilean economy is one of the main ideas of all the products like lithium, copper is one of the major strategies of Chile. We talk about health. We want to consolidate Chile as a trustable partner of sustainable technology and innovation, where we have a lot of linkages and potential to develop with India. Chile has the virtue of being a serious and respected country at the international level, and at the basis of this prestige, we try to find out better investments. And the years of the democracy of Chile, whether it has been the earlier presidents, President Lagos, Bachelet, Piñera, who have been there, have added to the democracy. This is what I commented to Mr. Modi in the process of as a key partner for Chile in multiple areas, and also getting in touch with startups and businessmen as a measure for multiple inputs which can be facilitated through the opportunities which can be offered to both the countries, and eliminating the bureaucracy which is there, which is impeding the growth. Also, this visit has been marked by culture. We are working together to bring about the potent audiovisual industry of India, to bring it to our country with the Shoot in Chile program, which we are going to present for the creation of films in Chile. What we also spoke in the meeting, what India has done with its presence of Bollywood is tremendously important. The expansion of the culture and a non-hegemonic perspective to be expanded, to make it visible the diversity available in the world. Like Chileans and many Latin Americans, which we have been working and looking at and will like to work upon together. With Prime Minister Modi, we coincide in the G20 meeting to promote the collaboration in this regard. This has been formalized from 1993, again renewed in 2019 and 2022. We have renewed those agreements, and this is the most important news that we can announce, that in this visit we celebrate the first exchange program between culture and the Ministry of World Heritage with the Indian counterpart, which is going to provide a base for boosting cultural exchange of art and movies, international fairs. Chile is of 20 million 20 million inhabitants. India is more than 1,500 million inhabitants. So, in spite of our geographical and demographical differences, we can have a lot of things in common, and we can learn a lot from each other. So, the part of the Antarctic, where the India has maintained an active exchange in the forums, but till now we haven't had a political exchange as far as Antarctic is concerned. Chile has Antarctic as one of the most important issues. It's a way, works as a gateway to the Antarctic, and we have invited Prime Minister Modi to visit Antarctica, and we have signed a cooperation deal with our area of exploration and major areas which we can work together with India regarding Antarctica. We have also signed an MOU with Senapret and its counterpart in India, which is going to facilitate the exchange of regarding disaster management, which are there, which are very much common in the entire world. Also, we have backed India
la aspiración de in the ofrecer aspiration of a permanente permanent post responsabilidad at the United Nations cierto, Security Council, en and la also reforma de los the reform organismos de of the gobernación que se han the creado international y organizations to para make them more que efficient vivimos en el mundo. for the times that we are living in. En materia With de regards crisis to climática, climate estamos crisis, de acuerdo en que we debemos are trabajar in agreement that we juntos, must somos work océanos, together es algo que nos une. and protect the Por ello, oceans which joins us. he reiterado al primer And I have ministro Modi reiterated to la firmeza de Mr. nuestro Modi compromiso con our el acuerdo firmness and sobre our la conservación commitment de uso sostenible towards de la the biodiversidad conservation marina, of más allá de the las maritime jurisdicciones diversity, nacionales, y espero and que logremos have conseguir la explorations, comunidad internacional and we que will se be base able en to la have sabiduría cooperation viviente. at international level. Estimadas y estimados, hoy estamos dando inicio Ladies a una and visita de gentlemen, we Estado are having que an creo initiation honestamente va a ser de of las a más visit importantes de which nuestro is mandato. going to bring about major Estaremos en Nueva decisions Delhi, in future. en Agra, en Right, Mumbai, we are going to en stay in Bangalore, Agra, con diferentes Bangalore, agendas. Mumbai with Estamos different con una agendas. importante delegación We de are here autoridades del with Estado, de parlamentarios y major authorities parlamentarias, and de parliamentarians, científicos, de innovadores, scientists, de innovators, startups, de gente de startups, cooperativa, and de estudiantes, the de students profesores and de la educación professors pública, who are part of de the doctores del delegation yoga and y de la practitioners medicina of ayurveda. yoga and Todo esto Ayurveda. con el All objetivo these de people atraer that nuevas are here. inversiones, The idea is to nuevas attract experiencias, investments and have acercar exchange nuestro caso of como país tan knowledge importante en and el establish mundo actual. our relations and take it forward with Y hoy, a the 16 años countries de la of última so much visita de un jefe importance de in the Estado world. chileno, asumo con responsabilidad I have the el deber de seguir responsibility fortaleciendo to nuestras keep relaciones a on través de strengthening medidas our tan relations importantes como with these concretas. important areas Por as eso, very lo que concrete podemos areas. anunciar So we hoy announce sí here es, yo creo, la that noticia principal this is the main de este news viaje, today of this que visit, de mucha that conversación, after a lot of después de mucho conversation trabajo, de and a lot of work y de un acuerdo through firmado our con el ministro teams, Modi, con el primer ministro Modi, and after puedo the anunciar visit of que daremos Mr. inicio a las Modi, negociaciones that entre we India y have Chile por un acuerdo de reinitiated asociación of estratégica integral. we are going to have a Que viene a formalizar comprehensive nuestro economic compromiso de trabajar partnership unidos y de forma agreement colaborativa and work por el together in a fortalecimiento de nuestra collaborative relación manner económica con miras to al strengthen beneficio mutuo, our algo que se mutual hace benefit, fundamental which is going to be con una fundamental evolucionado in a world y which is equivalente evolving tratado de libre comercio. and talking about free Esto, trade. por supuesto, So será con la this flexibilidad will be available with a flexibility for different sectors, which are going to, with the idea to be mutually beneficial for all the parts during this year. I thank Mr. Modi for his interest in bilateral cooperation.